हेलो स्टूडेंट्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज द पोएट मिसस्पेल्ड द वर्ड लेफ्ट लीप. इसको क्यों उन्होंने मिसस्पेल किया है? Right, so the poet takes a liberty with language and misspells some of the words to emphasize the basic temperament ऑफ अ लेपर्ड. क्योंकि लेपर्ड का जो बेसिक टेम्परामेंट है, बेसिक ट्रेट है, वो लेफ्ट है, तो उसके लिए उन्होंने ही यूजेस लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लीप्ड. राइट, सो सिमिलरली इंस्टेड ऑफ लीप एंड लीप शी यूजेस लेप एंड लेप, और बेसिकली वो इसको लेपर्ड से एक राइम देना चाहती है. राइट, सो दिस मिसस्पेल्ड वर्ड्स मैच बेटर विद लेपर्ड, लेपर्ड से ही लेप, एंड मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेपर्ड लाइट एंड ह्यूमरस. Next question, why can a novice, novice का मतलब होता है who is new at something, so novice feel nonplussed या confused feel करता है while differentiating between two wild animals. So since a novice is just a beginner या learner है and does not have a deep and minute knowledge of the appearances and behaviors of different animals, he or she may feel confused while differentiating between two animals. तो वो confuse हो सकता है because since he is new at it. Right? How is the picture of the chameleon paradoxical? वो paradoxical क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपने मैंने आपको चैप्टर समझाया था और जो थीम वाला वीडियो है उसमें भी समझाया है. पैराडॉक्सिकल होता है, आपने पहले कुछ अलग स्टेटमेंट कहा है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं. तो यहाँ पे कमेलियन को लेके आपने पहले ये बोला कि इफ यू सी नथिंग इन दैट ऑन द ट्री, अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं तो पक्का उसके ऊपर कमेलियन है. तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो पैराडॉक्सिकल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. राइट, so a paradox is a statement which apparently seems to be contradictory but has some truth if we look for some deeper meaning. तो ये नहीं है कि आप कुछ गलत बताएंगे, contrary meaning होगा, truth भी होगा. Right, so a chameleon can so well camouflage itself by changing its color. Camouflage कहते हैं change color करने के process को, that one often fails to notice its presence. वो इतना smartly अपना color change करता है कि हमें वाकई में ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ है ही नहीं, एंड देयरफॉर इसी को एक पैराडॉक्स बोला जाता है. तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स कभी कभी आपके क्वेश्चंस में पिक कर लिए जाते हैं. ऑल नॉलेज इज यूजफुल बट नॉट all knowledge is worth the cost. Right, so elaborate on the quotes in the context of this poem. Adopting a tone of irony, इसमें irony यूज किया गया है. अब आप मुझसे ये मत पूछना कि आयरनी क्या है, ठीक है, जो इसका हमने थीम और लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो है उसमें मैंने आयरनी एक्सप्लेन किया है, जल्दी से जाके वहां देख लो पहले. Right, shows how dangerous it may be to go near wild beasts of prey. So if people dare to go near them, to go further about their appearance, अगर आप उनके और पास गए उनकी appearance जानने के लिए and behavior जानने के लिए, they expose themselves to extremely dangerous situations. तो वो बहुत dangerous हो सकता है, they may attack you even. ठीक है, सो नॉलेज ऑफ कोर्स इज यूजफुल होती है, बट अपनी लाइफ को दाव पे लगा के नॉलेज इकट्ठी करना, दैट इज नॉट गुड. सो इट विल प्रूव टू बी फ्यूटाइल एंड नॉट वर्थ द कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी प्रेशियस. क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है, अपनी लाइफ को दाव पे लगा के नॉलेज अटेन करना, दैट इज लिटिल फ्यूटाइल. राइट, how does the poem How to Tell Wild Animals shows the insight of the poet into the wildlife? The poet Carolyn Wells evidently has an in-depth knowledge. उन्हें बहुत डेप्थ में नॉलेज है of wildlife. It is because of her knowledge that she presents vivid images of different wild animals and reptiles. बहुत सारे wild animals और reptiles की वो इतनी beautiful तरीके से अलग अलग traits को सामने रख के वो हमें differentiate करना सिखा रही हैं. She gives picturesque descriptions of their appearance and also indirectly shows their natural ferocity. The Asian lion, the Bengal tiger, leopard, and a bear are shown to be charging at their victims in a potentially fatal manner. ये चारों जो animals हैं, किस तरीके से उनके अंदर capacity है attack करने की. Right, the factual pictures of crocodiles and hyenas are given showing one as shedding tears and other having a smile on the face, seem to be smiling while gorging on their prey. वो smile है, tears हैं, सब कुछ है, लेकिन attack फिर भी कर सकते हैं. The picture of chameleon too is a factfully correct and interesting. ये इंटरेस्टिंग भी है और
फैक्ट भी है, क्योंकि उसको कैमोफ्लेज करना उसके लिए एक फैक्ट है, राइट? Compare and contrast the behavior of the tiger towards the visitors in How to Tell Wild Animals and जो टाइगर इन द जू, हमने दोनों किए पोएम्स, तो दोनों एनिमल्स के बारे में है। एक में टाइगर इन द जू में वो केज में है, राइट, और यहाँ पे वो फॉरेस्ट में है। क्या डिफरेंस है दोनों का? So the tiger in How to Tell Wild Animals enjoy free strolls, आराम से घूम सकता है इधर उधर in the dense open forest, which is his natural habitat. Like there is nothing to inhibit or restrain his natural behavior and his natural way of life. He freely and naturally pounces upon the person, किसी के ऊपर भी वो अटैक कर सकता है, daring to come near him, जो भी उसके पास जाएगा। But the tiger in the zoo is changed, deprived of his natural environment, which has curbed his natural behavior. लेकिन जो केज में है उसका तो आपने नेचुरल बिहेवियर ही चेंज कर दिया, बिकॉज वो मजबूर हो गया है, वो केज में है, ना तो वो इधर उधर घूम सकता है, ना ही वो अपने प्रे के लिए शिकार कर सकता है, ना ही वो अपनी जो फेरोशियसनेस है उसको दिखा सकता है। आपने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, right? Instead of roaring ferociously and preying on the visitors, he remains indifferent to them, as if annoyed at being made an object of entertainment, right? ये object है, आपने उसको सिर्फ एक object of entertainment बना के छोड़ दिया है। Write a note on the element of humor in the poem How to Tell Wild Animals, right? So the poem How to Tell Wild Animals is both informative and humorous. The poet has touched factual descriptions in the mold of wit and humor. Humor has been created through both the description से भी humor आ रहा है, और जो लैंग्वेज यूज किया है लेप लेप करके, ठीक है, इन सब से भी आ रहा है। इवन द पोएट्स कॉशन टू द रीडर्स अगेंस्ट द डेंजर्स, जो पोएट ने कॉशंस दिए हैं उनमें भी has been made through humorous statements, कि आपको अगर वो खा जाए तो ये समझ लेना कि वो भी आपका ह्यूमर है। The descriptions of the Asian lion and the Bengal tiger are full of wittiness, as in both the cases the way of identifying these beasts is interesting, right? कि वो आपके ऊपर अटैक करके खा गया। One has to encounter a roaring Asian lion to know it be a prey to the Bengal tiger to be able to identify it. And similarly, the way to recognize a bear is to be tightly embraced by it. Bear मतलब उसको अगर वो tightly embrace कर रहा है, आपको hug दे रहा है, इसका मतलब वो bear है। The smiling face of hyena is contrasted with the crocodile's weeping face, right? In such a way that it provokes laughter. दोनों में कितना लाफ्टर आता है, हमें हंसी आती है जब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सो ये जो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है उसके बाद कैमेलियन का, दैट व्हेन देयर इज नथिंग ऑन द ट्री देयर इज अ कैमेलियन इज फुल ऑफ विट। आप देखेंगे आपने लाइन बाय लाइन सारे एनिमल्स को कवर करते हुए पूरा थीम ही बता दिया है। For the beast has the ability to camouflage and blend with its surroundings. The language used by the poet at some places is replete with humor. The poet has used poetic license to make the language very interesting. For example, the word leap is misspelled as lep, and the word leaped is spelled as leapt to make them sound like the first fatal stroke of the bear on the embraced final fatal stroke of the bear on the embraced victim has been humorously and ironically called as Kevis, right? Thus, the poet had made factual statements in a highly humorous manner. There is beautiful synthesis in the seriousness and the non-seriousness. दोनों के बीच में बहुत ही एक balanced humor create किया है author ने. The poem shows how wild beasts could cause danger to the lives of those who go near them. Will you recommend that animals should be kept in zoos? Why and why not? The poem does present the fierce, violent nature of wild beasts who prey upon other animals and even human beings who go near them, right? But I would never recommend that they should be separated from their natural habitat और उनको zoo में रखा जाए. Sorry. If they are deprived of their freedom and their movements are curtailed, they will develop certain psychological problems. और इसीलिए वो टाइगर इन द जू में आपने देखा क्या उसका डिस्क्रिप्शन था. He was not happy at all. वो सिर्फ ऊपर स्टार्स वगैरह को देख रहा है कि मैं कब फ्री होऊंगा. आपने उसका जो साइकोलॉजिकल वो है वो डिस्टर्ब कर दिया है सारा. They will lose their natural behavior.
And if we do not allow animals to lead a natural life in their natural habitat, we will be interfering with the ways of nature, which will adversely impact the ecological balance. Nature has made the world beautiful, and its rich biodiversity must be maintained. Forests are meant to be the habitats of wild animals, और उनको वो ही रहने दें तो अच्छा है. राइट, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड. थैंक यू.